एम लक्ष्मीकांत सीरीज इंडियन पॉलिटी आज आम पार्ट 3 डिस्कशन करबा। पार्ट 3 रे आज आम कौन कौन पढ़ा यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आम इंडियन पॉलिटी रो 7 एडिशन कंटिन्यू करूछु। तो जो माने प्रीवियस क्लासेस देखि नांती पार्ट 1 एंड 2 सेटा प्लेलिस्ट अवेलेबल अछि देखि नेबे एंड पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप रे अपलोड हो जाइछि। तो टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर दियंतु। ठीक अछि। तो आज रो क्लास स्टार्ट करबा। तो आज हमर फर्स्ट पार्ट रो अछि न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। माने एटा डायरेक्टिव डीपीएस में पार्ट 2 रे ऑलरेडी आको पढ़ी सारिछु, बट आको हमें को अमेंडमेंट थ्रू रो ए जो न्यू डायरेक्टिव पॉलिसी गुडा ऐड हेछि सेटा ही हमर इना मेंशन करा हेछि। तो कोन कोन ऐड हेछि फर्स्ट देखो 42nd अमेंडमेंट रे जोटा कि 1976 रे हेतिला 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड करा हेतिला। एटा केते रे ना हमर 42nd अमेंडमेंट रे ऐड करा हेतिला। कोन कोन फर्स्ट हला आर्टिकल 39 एटा गोटे क्लॉज करा हेतिला क्लॉज एफ रे ऐड करा हेछि कोन ना अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जेहेतु चिल्ड्रन मानको कथा आछि तो एटा बहुत इंपोर्टेंट। आर्टिकल 39 क्लॉज एफ रे ऐड करा हेतिला इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे। Then second is to promote equal justice and to provide free legal aid to poor, 39A free legal aid. Then 3 रे कौन करा हेतिला to take steps to secure the participation of worker in the management of industry रो management रे equal participation करि परिबे। and fourth one article 48A कौन करा हेतिला to protect and improve the environment रो improvement को ऐड करा हेतिला 48A रे। ठीक अछि। तो 42nd अमेंडमेंट रे चारटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड करा हितिला। नेक्स्ट अमेंडमेंट आसिला 44th अमेंडमेंट जेटा कि हितिला 2 वर्ष परे 1978 रे हितिला। एठी मात्र गोटे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड करा हितिला जोटा कि कोन थिला व्हिच रिक्वायर्स द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। आर्टिकल 38 एटा ऐड करा हितिला कि ठीक अपॉर्चुनिटी दिया जिबा दरकार। Then the 86th Amendment Act of 2002 एटा कौन कला ना change the subject matter of Article 45 and made elementary education a fundamental right under Article 21A. The amended directive requires the state to provide early childhood एटा गोटे पुनी early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. Then fourth amendment हेतिला 97 अमेंडमेंट रे पुनी थर ऐड करा हितिला गोटे जोटा 2011 रे हितिला गोटे न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड करा हितिला। कोन सेटा ना कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ऐड करा हितिला। इट रिक्वायर्स द स्टेट टू फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोसेस आर्टिकल 43B। तो एटा ऑलरेडी पढी सारिछु। ए जो आर्टिकल गुडा अमेंडमेंट करा हेछि आपको बस गोटे जगह रे हमें पढ़ी परिबा। बेसी नै चारटा अमेंडमेंट एठी हमें पढ़िबा। कोन कोन अमेंडमेंट थिला गोटे पढ़िथिले हमें 42 अमेंडमेंट, गोटे 86, गोटे 44, गोटे 97। माने 1976 रे गोटे हला, पुनी 2 वर्ष पर हेतिला 78 रे, तापरे पुनी 2002 रे हेतिला, 2011 रे हेतिला। तो एटा रे हमर चारटा प्रिंसिपल ऐड हेतिला। 39 एक्चुअली फुल 39 तो ऐड हे नथिला। क्लॉज एफ ऐड हेतिला। कोन हेतिला ना हेल्दी डेवलपमेंट। एई भडा मने रखि देई परिबा हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। Then 39A रे कोन ऐड हेतिला इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। इक्वल जस्टिस कहा पई थिला पुअर मानक पई एंड फ्री लीगल एड। Then 43A रे कोन थिला टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो एठी हम मने रखि देई परिया पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, वर्कर मानकर मैनेजमेंट। देन 48A रे कोन थिला एनवायरनमेंट। 43A टा थिला हमर कोन 43A टा थिला एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिबा एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करिबा। देन 44th रे ओनली वन ऐड हेतिला सेटा कोन आर्टिकल 38 कोन थिला मिनिमाइज इनइक्वालिटीज को हमें मिनिमाइज कर दबा। को इनइक्वालिटीज मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन income, then status, facilities and opportunity सबु थिरे इनइक्वालिटी को मिनिमाइज कराबो। देन 86th अमेंडमेंट रे कोन ऐड हेतिला ना आर्टिकल 45 एठी कोन हेतिला अर्ली चाइल्डहुड केयर।
और एटा देखो एटा थिला कोन हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एटा थिला अर्ली चाइल्डहुड केयर केते वर्ष पर्यंत ना जे पर्यंत शिशु को 6 वर्ष हेइनी द 97th amendment 43B ऐड हेइतला एटी कोन हेइतला प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल माने स्टेट को कोन करा जेथिला तो स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन functioning and management of cooperative society पे दिया हितला ठीक अछि तो ए चारटा जक अमेंडमेंट भी इंपोर्टेंट और ता अंडर रे को आर्टिकल ऐड हितला बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि हमर न्यू डीपीएसपी ऐड हितला थ्रू अमेंडमेंट ठीक अछि न्यू डीपीएसपी थ्रू अमेंडमेंट नेक्स्ट सैंक्शन बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल बिहाइंड कौन सैंक्शन थिला तो कौन किए कहिचंदे देखिबा तो फर्स्ट हला सर बीएन राव जे कि हमर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थिले टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रेकमेंड करथिले जे he recommended that the rights of an individual should be divided into two categories से कहिथिले कि जो मनुष्यर जहां भी राइट्स अछि ताको दीटा कैटेगरी रे डिवाइड करा जाऊ गोटा हला जस्टिसेबल एंड गोटा हला नॉन जस्टिसेबल व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी तो ड्राफ्टिंग कमिटी को एक्सेप्ट करा हला जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल तो एठी हमर जस्टिसेबल के थिला हम जेतले फंडामेंटल राइट्स पढिले ए फंडामेंटल राइट्स ता थिला जस्टिसेबल किंतु जेतेबेले हमें कथा आस जाउची डीपीएसपी को डीपीएसपी ता कोन नॉन जस्टिसेबल डीपीएसपी पई कोनोसी कोर्ट तुमको फोर्स करि परिबो नाही नॉन जस्टिसेबल ठीक अछि consequently the fundamental rights which are justiciable in nature are incorporated in part 3 तो सेति पे हमर जोटा हमर कोडा फंडामेंटल राइट को दे दिया हला पार्ट 3 रे आ डीपीएसपी को दिया गला पार्ट 4 रे and the directive principle which are non justiciable in nature are incorporated in part 4 the specific difference between the two एई मानकर डिफरेंस कोन अछि ए टेबल रे हम देखि दबा डिफरेंस कोन अछि फर्स्ट हला फंडामेंटल राइट these are negative because they prohibit the state from doing certain thing fundamental right कोन होचे एटा नेगेटिव हमें कहि परिया कना फंडामेंटल राइट रे किछि किछि जिंस अछि जोटा कि स्टेट को करिया को मना करा हिची बट इन केस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल these are positive because they require the state to do certain thing काहेकि ना एको माननी कि हम स्टेट किछि जिंस करूची then these are justiciable and DPSP are non justiciable then they aim at establishing political democracy in the country fundamental right कोन कहउछंती हमें political democracy करिबा country रे but directive principle कोन कहउची establish social and economic democracy then these have legal sanction माने justiciable legally कोर्ट को जाई परिबा but in case of directive principle these have moral and political sanction moral अछि but माने कोर्ट को जाई परिबेनी they promote the welfare of the individual hence they are personal and individualistic but in DPSP promote welfare of the community एटा गोटे डिफरेंस ता फंडामेंटल राइट ता इंडिविजुअल पई काम करूची बट एटा DPSP ता फॉर द कम्युनिटी then fundamental right do not require any legislation of the implementation they are automatically enforced but in case of DPSP require legislation of the implementation they are not automatically enforced then the courts are bound to declare a law violating of any of the fundamental right at unconstitutional and invalid जदि कहार फंडामेंटल राइट हैम्पर होउची बा फंडामेंटल राइट रे किछि भी प्रॉब्लम आसुची तो कोर्ट कोन करिवो ताकू डिक्लेयर कर दे परिबो कि वायोलेशन जदि हैला तो unconstitutional declare invalid declare करि परिबो but the courts cannot declare a law violative of any directive principle as unconstitutional and invalid तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल केस रे एबडा कोर्ट किछि भी डिक्लेरेशन करि परिबो नाही ठीक अछि तापरे कोन हला though the directive principles are non justiciable the constitution जोटा कि आर्टिकल 37 ने मेंशन अछि makes it clear that these principles are fundamental in the governance of country एटा गोटे एमसीक्यू भी मु करथिली एमसीक्यू क्लास रे क्वेश्चन ता दिया हितला डीपीएसपी आर fundamental in the government of the country by fundamental and it shall be the duty of the state to apply these principle in making law बनेबा पई ए डीपीएसपी रो प्रिंसिपल को यूज करिवो
किए स्टेट thus they impose a moral obligation on the state authorities for their application but the real force behind them is political, that is public opinion as observed by आलादी कृष्णस्वामी आयर जोटा कि ऑब्जर्व करथिले आलादी कृष्णस्वामी आयर नो मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड राइट हेरेडिटली टू इग्नोर द प्रोविजंस इन पार्ट 4 के इग्नोर तो करि परिबेनी बट ताको फॉलो करी कि जे कोनसी रूल्स बनैबे टू मेक द कंट्री ए वेलफेयर स्टेट सिमिलरली बी.आर. आंबेडकर कोन कहिसंती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहिसंती जे ए गवर्नमेंट व्हिच रेस्ट्स ऑन द पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो जो कंट्री पूरा वोट ऊपर डिपेंडेंट रहूची से डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इग्नोर करि परिबो नाही shaping its policy if any government ignores them जदि government ignore करूची it will certainly have to answer for that before the electorate at the election time तो पुणी थरे ताको कोर्ट सिना जस्टिसेबल हे परिबोनी बट नेक्स्ट टाइम जते बेले वोटर मानक पाखरे ताको आंसरेबल हबा पे पड़िबो The framers of the constituents made the directive principle non-justiciable and legally non-enforceable because तो एई सब कारण से माने देइथिले कि काहे कि से माने non-justiciable non-enforceable करिसंती First one is the country did not possess a sufficient financial resource to implement them sufficient financial resource nahi Second है the presence of vast diversity and backwardness in the country रो diversity हमारा इंडिया रो बहुत बेसी और backwardness पाई एटा टिके problem implementation पाई Then the newly born independent Indian state with its many preoccupations might be crushed under the burden unless it was free to decide the order तो जदि ताको पूरा जबरदस्त इंप्लीमेंट कर दिया जिवो तबे जो न्यूली फॉर्मेशन हबो स्टेट तो मे बी से माने कोन हे परिबे बर्डन रे आसी जाई पारंती The constitution makers therefore taking a pragmatic view refrained from giving teeth to this principle they believed more awakened public opinion rather than in court procedure तो सेमाने टाको कोन बिलीव कले सेमाने बिलीव कले जे कोर्ट ऑफ प्रोसीजर अपेक्षा अल्टीमेट सैंक्शन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल तो ए प्रिंसिपल को फुलफिलमेंट करा जाओ बट एटा कोन एटा एनफोर्सेबल करा जीवनी जबरदस्ती नहीं बट एटा को मानिले परे न मानिले इलेक्टोरेट मानक पाखे आंसरेबल हबा पे पड़िबो पब्लिक पाखरे देन तो जेहेतु यार हमर बहुत किछि देखिलो हमें डीपीएसपी जस्टिसेबल नुह किंतु मानिया को पड़िबो तो एसी की सब प्रॉब्लम पई बहुत किछि क्रिटिसिज्म मध्ये हेतिला डीपीएसपी ऊपर The directive principle of state policy have been criticized by some members of the Constituent Assembly as well as other constitutional and political experts of the following grounds. तो एई सब कारण पई हमर बहुत क्रिटिसिज्म आसीछि जेमति कि फर्स्ट क्रिटिसिज्म थिला नो लीगल फोर्स माने द डायरेक्टिव्स माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमर पॉलिसी गुडा हैव बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली बिकॉज ऑफ देयर नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर ए जो नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर पे हमन को बेसिक क्रिटिसाइज करा जाइछि while KT Saha dubbed them as pious superfluities and compared them with a check on a bank payable only when the resources of the bank permit से माने कंपेयर करिसंती कि एटा गोटे एमिति चेक कि बैंक सेते बेले ही से चेक रो अमाउंट देबो जेते बेले बैंक ताको माने बैंक पाखे रिसोर्स हबो बैंक परमिट करिवो Nasiruddin contends and that these principles are no better than the New Year's resolution आउ किछि लोक भी कहिसंती कि एटा होची गोटे न्यू ईयर रिजोल्यूशन जोटा कि कोन होइबो ब्रोकन ऑन द 2nd जनवरी जेंति समस्त जा फर्स्ट न्यू ईयर रे बहुत सारा रिजोल्यूशन नै जानती किंतु सेकंड डे आसु आसु धीरे धीरे रिजोल्यूशन सब भूली जानती इवन एज टीटी कृष्णम आचार्य described the directives as the veritable dustbin of sentiments एई भडा मध्ये क्रिटिसाइज करिसंते प्रिंसिपल्स गुडो को ए veritable dustbin केसी where called them as the manifesto of aims and aspirations and opined that they serve as mere moral homily and Sir Ivor Jennings thought they are the only pious aspirations एई भडा बहुत किछि कोन करा हेछि क्रिटिसाइज करा हेछि सेकंड क्रिटिसिज्म कोन हेछि ना इलॉजिकली अरेंज ए जो हमर DPSP टा कोनोसी लीगली अरेंजमेंट तारो नाही critics opine that the directives are not arranged in logical manner based on a consistent philosophy कोनोसी consistent philosophy हिसाब रे कोनोसी सीरियली कोनोसी अरेंज करा हेनी
According to N. Srinivasan, the directives are neither properly classified nor logically arranged. ना ताको properly classify करा हिची अलग अलग category रे ना ताको logic हिसाब रे arrange करा हिची. The declaration mixes up relatively unimportant issues that the most vital economic and social question. तो जो थी पाई बहुत सारा important social questions भी arise होची. It combines rather encouragingly the modern with the old and provision suggested by the region and science with provisions based purely on sentiment and prejudice. तो एटा completely कहा ऊपर डिपेंड करूची completely sentiment ऊपर डिपेंड करूची and prejudice जेहेतु एटा justiciable नुह. Sir Ivor Jennings too pointed out that these principles have no consistent philosophy. आउ Sir Ivor Jennings एटा मध्ये कहिसंती कि ए जो हमें philosophy सब कहूचु DPSP रे एटा करबा सेटा करबा आकु फॉलो करबा, these have no consistent philosophy. यार कोनोसी consistency नाही. Then आउ कोन क्रिटिसाइज करा जाउची, आउ क्रिटिसाइज करा जाउची conservative. Sir Ivor Jennings से आउ कोन कहउचंती ना these directives are based on political philosophy. पूरा completely philosophy of the 19th century England. He remarked the ghosts of Sydney Webb and Beatrix Webb stuck to through the pages of the text. Part 4 of the Constitution express Fabian socialism without the socialism. आउ से कौन कहते ना these deemed to be suitable in India in the middle of the 20th century. 20th century middle रे तो ठीक अछि. The question whether they are suitable for the 21st century cannot be answered. तो एटा से कहते कि जो philosophy गुडा mid 20th century तो accept करि परबा किंतु 21 century रे एही opinion को लोक माने मानिबे कि मानिबे नी किया जेहेतु enforceable नुह जबरदस्ती नाही तो तांकर सेंटिमेंट ताको काम करिवो ना न करिवाटा केही भी आंसर दे पारिबे नाही. But it is quite probable that they will be entirely outmoded. ठीक अछि. नेक्स्ट कोन अछि आउ कोन हला ना constitutional conflict. के सांथम से कोन कहिसंती the directives lead to constitutional conflict. कोन कोन कहा कहा भितर हबो conflict ना between center and state, between president and prime minister या फिर between the government and the chief minister. तांको हिसाब रे क्या हिसाब रे के सांथनम हिसाब रे the center can give direction to the state with regard to the implementation of these principles. Center state को order दे देला कि DPSP को तुम implement करो and in case of non compliance can dismiss the state government. Similarly, when the prime minister gets a bill which violates the directive principle passed by the parliament, the president may reject the bill on the ground that these principles are fundamental to the government of the country. Hence, the ministry has no right to ignore them. The same constitutional conflict may occur between governor and the chief minister at the state level. ठीक अछि मने कर गोटे लॉ पास करिवो गवर्नमेंट ऑर्डर कर देछि स्टेट को कि तमे डीपीएसपी को सेल पालन करी कि तमे लॉ पास करो या फिर एमती किछि केस हला कि माने मानिलेनी तो एमाने मानिलेनी तो एमाने जेतरे कंप्लेन करिवो कि मु तो डिसमिस कर देबी तमे मानिलोनी तो एमाने कोन कहिबे कि डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल तो एमानक भितरे कॉन्फ्लिक्ट भी एराइज करि पारिबो के डीपीएसपी कॉन्फ्लिक्ट एराइज करिवो. ठीक अछि तो एतिकी तो सरी गला हमर क्रिटिसिज्म सरी गला कि कोन क्रिटिसिज्म एइना हमें देखिबा कि एटा जो हमें पढुचे ए डीपीएसपी तार कोन किछि यूटिलिटी अछि तो ठीक अछि यूटिलिटी देखिबा कोन यूटिलिटी अछि. In spite of the above criticism, एते सब criticism परे मध्य the directive principle are not an unnecessary एरा गोटे unnecessary जिंस नुह constitution रो. Constitution itself declare that they are fundamental to the government of the country. Constitution एटा भी declare करिछि एई पॉइंट ता बहुत important कि the constitution itself declare that they are माने DPSP are fundamental to the government of the country according to the LM Singhvi and eminent jurist. से कोन कहिसंती ना the directives are the life giving provisions of the constitution. से कहिसंती कि देते क्रिटिसिज्म परे मध्य से गोटे भलो जिंस कहिसंती कि डीपीएसपी होउची life giving provision of the constitution. They constitute the top of the constitution and its philosophy of social justice,
एमसी चांगला फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी भी तांको ओपिनियन रे कोन दैछंती ना इफ ऑल दिस प्रिंसिपल आर फुल्ली कैरिड आउट आवर कंट्री वुड इंडीड बी ए हेवन ऑन अर्थ तो एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट से कहछंती कि जदि ओटा माने एनफोर्सेबल नुह जदि आमे समस्त डीपीएसपी को पालन करिबा तबे आम जो कंट्रीटा कोन हे जिवो दिने हेवन माने स्वर्ग रे परिणत हे जिवो माने बहुत भलो हे जिवो India would then not be not only democracy in the political sense but also a welfare state. India केवल गोटे political sense रे रहिबनी बल्कि गोटे welfare state मध्ये हे जाई परिबो. Looking after the welfare of the citizen और जोटा के सब बडे लोक मानकर citizen मानकर welfare पई ही चिंता करिवो. Dr. B.R. Ambedkar had pointed out that the directives have great value. Dr. B.R. Ambedkar भी कहछन्ती कि directive रो बहुत value अछि because they lay down that the goal of Indian polity is economic democracy as distinguished from political democracy. DPSP कौन करूचे ना हमरो political democracy को welfare democracy economic democracy रे distinguish करि पारुचे. Granville Austin opined that the directive principles are aimed at furthering the goals of the social revolution. Social revolution goal को से point out करूची or to foster this revolution by establishing the conditions necessary for its achievement. B.N. Rao, the constitutional advisor, जे B.N. Rao हमारे पढ़े भी, who was the constitutional advisor? B.N. Rao, the constitutional advisor to the Constituent Assembly, stated that the directive principles are intended as moral precepts for the authorities of the state. They have at least an educative value. आउ कौन ना according to MC Stabler से कौन कहते the former Attorney General of India से कहते ना directive principle although confer to legal rights and create no legal remedies are significant and useful in the following. ए किछि गुडा उपाय रे से useful. First कौन कहते they are like an instrument of the instruction. First class रे भी पढ़िथिले instrument of the instruction. आउ कौन कहते ना they have served as useful beacon lights to the courts. काहेकि एमती काहेकि कहते काहेकि ना जदियो कोर्ट तो एनफोर्सेबल करि परिबनी बट किछि भी राय दबा आगरु किछि भी डिसीजन नबा पई डीपीएसपी को से यूज करि परिबे. They have helped the courts in exercising their power of judicial review. किछि भी judicial review पई डीपीएसपी को यूज करि परिबे माने डीपीएसपी रो हेल्प नै परिबे. They form the dominating background to all state action, legislative or executive, and also guide to the courts in some respects. किछि रेसा कोर्ट को भी गाइड करि परिबे. Then आउ कोन ना they can amplify the preamble which solemnly resolve to secure all citizens of India justice, liberty, equality and fraternity. तो ये जो हमारा preamble रे जो लिखा है सब citizens को justice, liberty, equality एटा को भी से amplify करूची कि DPSP. आउ कौन रोल प्ले करूची फर्स्ट हैला facilitate stability and continuity in domestic and foreign policy in political, economical and social sphere in spite of changes of the party in power. पार्टी पावर जहाँ भी चेंजेस आसुना कहीं कि डीपीएसपी गोटे रोल प्ले करूची कि स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी रो. नंबर 2 दे आर सप्लीमेंटरी टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. दे आर इंटेंडेड टू फिल द वैक्यूम इन पार्ट 3 by providing for social and economic rights. Then number 3 their implementation creates a favorable atmosphere for the full and proper enjoyment of fundamental right. Fourth, they enable the opposition to exercise influence and control over the operation of the government. The opposition can blame the ruling party on the ground that its activities are opposed to the directive. The opposition कौन करि परिबा blame करि परिबा ruling party को on the ground that को ground रे कि ना its activities are opposed to the directives. Next कौन हे परिबा ना they serve as a crucial test for the performance of the government. The people can examine the policies and program. लोक मानक पय जो भी policy और program आसुची समान ताको examine करि परिबे of the government in the light of the constitutional declaration. Then number 6 कोन they serve as common political manifesto.
जोटा मैनिफेस्टो होची एटा डीपीएसपी रा समस्त जे कौन से रूलिंग पार्टी चेंज होना कहीं कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो माने रूलिंग पार्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉलिटिकल आइडियो तांकर आदर्श आइडियोलॉजी किछि भी थाउ ना कहीं डीपीएसपी को से माने मानिबे हैज टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट these principles are intended to be its guide philosopher and friend तो ये जो डीपीएसपी रा तांकर गाइड भी फिलोसोफर भी एंड फ्रेंड भी इन इट्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ठीक अच्छे तो एतिकी आमर थिला कोन ना डीपीएसपी ऊपर क्रिटिसिज्म जो न्यू डीपीएसपी ऐड हैला ए सब हमें पढिले न्यू डीपीएसपी एडिंग आउ चारटा जो अमेंडमेंट पढिले तापरे कोन क्रिटिसिज्म अछि भी ताको पढि देले यूटिलिटी भी पढि देले नेक्स्ट अछि ए जो हमर पार्ट 3 रे थिला फंडामेंटल राइट और पार्ट 4 रे अछि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ए दि जनक भितरे कॉन्फ्लिक्ट ता कोन तो एटा हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिबा ठीक अच्छे पार्ट 4 रे हमें पढ़िबा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ठीक अच्छे आज पे एतिकी जदी पीडीएफ दरकार तबे टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करनेबो ता तळे लिंक दे दिया है वीडियो तळे ठीक अच्छे आज पे एतिकी थैंक यू।